Okay, but before we start the session out, I want to keep the session more interactive, right? And definitely, I can see a lot of faces from the last networking session have joined in. I can remember Kapil was there. I can remember Vandana was there. Acha, doesn't feel like I'm getting old, but still looks like I can remember some good faces also. How many of you have joined the networking session, by the way, which was there on, I think, Saturday? You can just write yes in the chat box. You can just write yes in the chat box. हाँ दीपा इज लाइक मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे सर ले लिया आपका नाम भी ग्रेट रियली हैप्पी टू सी लॉट ऑफ यू हैव जॉइंड इन लॉट ऑफ न्यू फेसेस हैव जॉइंड इन और कुछ लोग बड़े टेंशन में बैठे हैं नेहा जैसे लोग पता नहीं राइट शी इज वरीड वेरी मच एंड इनफैक्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेशन आई वाज सीइंग फ्यू ऑफ यू वर हाय सर से माय नेम अच्छा यूसुफ हाय यूसुफ रियली हैप्पी टू सी यू जॉइनिंग इन ओके गॉट इट ग्रेट. Okay, so before we start, and just wanted to check, is my audio video clear, right, for the people connected on Zoom? If it is clear, you can just write clear in the chat box. Likh do, please. Right, and the people, those who have connected on YouTube live, right, it would be great if you could give me an external confirmation by saying that if my audio video is clear, you can just write clear in the chat box. Right, if you could just write clear in the chat box, fatafat. Got it, great. Okay, really happy to see all of you have joined in. I think more than 200 people have joined in connecting, taking the count of YouTube plus Zoom. Okay, it would be great for the people, those who have connected from Zoom, if they can turn on their videos so that I can keep the session more interactive. And definitely this session is for you guys. So अगर आप videos on रखोगे तो definitely I can understand. Are you able to understand what I'm trying to say? And based on that, again, I can add more value to a conversation for this session out. Got it. Perfect. Now, before I start in, just wanted to know one important thing, right? What is your expectation from the session? You can just put it in a chat box, right? That will make me more precise what all things you need from the session out. So what is your expectation from the session out? You can just put in, although at the start of a session, I was trying to play some cool music and the topic and agenda of the session was there. Okay. Shivam Patel is saying pre-result क्या करें बताओ. अच्छा, pre-result interview कैसे दें? Okay. How to utilize this time? Need your guidance. Got it. How to apply as a fresher? Okay, got it. To-do list, what to do, how to apply for job pre-result. Okay. How to prepare. Very free लग रहा है. अच्छा, चलो बढ़िया है. Great. After the exams are over, definitely a lot of things have changed into picture. मैंने तो बड़ी सोने की कोशिश की थी, सच बता रहा हूँ. I've literally tried my best to sleep, but I was like नींद ही नहीं आती अब एग्जाम हो गई तो. ठीक है, तो that is there. Okay, should we go for certification? Okay, how to apply for internships? Got it. Great. So we are going to be covering every damn thing which is mentioned in the chat box. So before we start the session out, it would be again really great if everyone could turn on the videos so that I can also see your faces out और हमें भी देखने लगे यार कैसे दिखते हैं हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स राइट. अभी से आप ऐसे शक्ल छुपा रहे हो तो भाई सीए बनने का तो भाव बढ़ जाएंगे आपके. बट डेफिनेटली आई वुड रियली हैप्पी टू सी योर फेसेस आउट. Okay, without wasting much of our time, I would start this session, right? I would start the session out. Just give me a second. I will keep the session more interactive, and that is why I have prepared one Slido, right, where I would request every one of you to please come to slido.com. Just a second. Right results. Okay, I would request every one of you to please come to slido.com and put a code 504609. 504609 पे आप कोड डालिए. Once you go to slido.com, I would request every one of you to please come to go to slido.com and put a code 504609. ठीक है, अरे गूगल पे से स्कैन नहीं करना है भाई, है ना. प्लीज डू नॉट स्कैन इट फ्रॉम अ गूगल पे. ओके, just go to slido.com and put a code 504609 or you can scan it. Fatafat. I can see a lot of them have reached, a lot of them is struggling. Okay, let us start with the poll which is there. What is your energy level today? What is your energy level today? I hope someone is not having a less of energy.
Oh my God, I could see that everyone or most of them have a 10 level. Oh भाई, क्या खा के आए हो? हम्म क्या खा के आए हो ये बताओ पहले. Great, I can see a good level of energy you guys are carrying in the session. Feels like I need to increase my voice for the session. Oh भाई, चलो बढ़िया है, great. Still, a lot of you have not reached. Only 77 people have given a vote. I would request others just go to slido.com, put a code 504609. राइट, आई वांट टू कीप द सेशन मोर इंटरेक्टिव. और यूट्यूब पे जो लोग हैं आप भी टेंशन ना लीजिए, आप भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. राइट, यू कैन सी द एनर्जी लेवल ऑफ द पीपल इज वेरी हाई. गुड टू सी दिस आउट. सेकंड पोल, विच सिटी और योर प्लेस यू आर कनेक्टेड फ्रॉम. बताइए यार कहाँ से आए हो. डेफिनेटली विल बी रियली हैप्पी टू नो विच सिटी यू हैव केम फ्रॉम. पुणे, आमचा पुणे, मुंबई, दिल्ली, लुधियाना, नागपुर, वडोदरा, क्या बात है, हिसार, ओके, ठाणे, पंजाब, नवी मुंबई, पटना, उड़ीसा, इंदौर, ओके, सीकर, क्या बात है, त्रिचूर, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लखनऊ, क्या बात है भाई, डाइवर्सिटी, पूरा इंडिया बसा हुआ है आज यहाँ पे. केरला, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. पटियाला, ओहो हो, रेवा, right, good to see people connecting from all the different places out. Someone from tier 1 city, tier 2 city, all of them have joined in. Really happy to see this out. Great, great, great. Chalo, moving forward to a next and very interesting question. Which is your dream company? Okay, I'll read this again. Dream company, not a dream girl. ठीक है, पिछली बार पता नहीं एक बच्चे ने ना ड्रीम गर्ल पढ़ लिया था, अनुष्का शर्मा लिख दिया था उसने. ओके, ग्रेट. गोल्डमैन, बीसीजी, एमएनसी, आईटीसी, ओके, ब्लैक रॉक, आई लाइक दैट. ओके, अल्फाबेट, ओके, ग्रेट. गूगल, बेन एंड कंपनी, डेलोइट यूएसआई, ओके, ईवाई, यूबीएस, ओके, जेपी मॉर्गन, camonk, आई लव दैट, आई लव दैट. चलो बढ़िया है. ओन कंपनी, गॉट इट. जयपुर इज योर ड्रीम कंपनी. अच्छा, वो पुराने क्वेश्चन का जवाब अभी दे रहा है बेचारा. ठीक है. ओके, गॉट इट. ठीक है. तो just for a knowledge sake, right, the people have mentioned BCG, Bain and McKinsey. This is called as a MBB firms, right? These are the top consulting firms where people dream of getting into. And parallelly, it would be great if you could make the notes in my sessions. Definitely, we have planned a series of sessions and events for you guys. So वो SFM की बुक होगी ना आपकी, या ऑडिट की बुक होगी, उसमें कुछ पेज बचे होंगे, राइट? उसको यूज नहीं करना है. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक अ फ्रेश डायरी. ठीक है, कंजूसी नहीं, एक नई डायरी ले लो, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स यू आर गोना बी टेकिंग फ्रॉम द सेशंस आउट. सो आई वांट यू टू प्लीज हैव अ फ्रेश डायरी. एंड डेफिनेटली देखो, दिस इज फॉर यू गाइज. द टाइम यू कम हियर एंड सी दैट, ओ माय गॉड, ये बीसीजी नाम की चीज क्या होती है यार, हमें नहीं पता था, राइट? लॉट ऑफ थिंग्स यू विल गेट टू नो, एंड डेफिनेटली वी आर गोना बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस अपकमिंग इवेंट्स. So I would request you to please take a fresh notebook and try to make notes wherever you find it relevant for you. Okay, what is the funniest name you have been called? थोड़ा सा पूछ लेते हैं, अभी एग्जाम खत्म हुआ है तो ज्यादा तंग नहीं करते, बट आपका कुछ ऐसे फनी नेम होगा ड्यूरिंग योर स्टडी लीव और पीपल यूज्ड टू को कॉल यू आउट. ओके, बाबू. अच्छा, मुझे पता ही था बाबू सोना आएगा ही. जेरोक्स मशीन, ओ माय गॉड, दैट्स न्यू. कुत्ता, भाई ऐसे गाली वाली मत लिखो यार, ऐसा मत बोलो. ठीक है, रसगुल्ला, ओके, आउल, हाँ ये पढ़ाकू लग रहे हैं मुझे कुछ लोग. अच्छा, सीए साहब नहीं बोलते थे कि, मुझे तो सीए साहब बोलते थे बहुत लोग. टेंशन, लाला, संडे, ओके, ओके, बिजी पर्सन, ओके, गॉट इट. ठीक है, गुरु, समझ गया, मैं समझ गया. नाउ आई नो व्हाट आई एम सपोज टू कॉल यू आउट. है ना, मेरे पास सबके से नाम आ गए और निकनेम आ गए, तो मैं आपको यही बुलाऊंगा, गुडविल, सीए साहब, बिजी पर्सन. चलो ठीक है, ग्रेट. अच्छा, बाबू मीन स्मॉल चाइल्ड. ठीक है, ठीक है, सो सॉरी. ओके, गॉट इट. चलो, लास्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. व्हाट डिड यू डू इन द पास्ट 5 days पोस्ट एग्जाम? क्या किया यार एग्जाम के बाद, जरा हमें भी बताओ. राइट, डेफिनेटली विल बी रियली हैप्पी टू नो व्हाट यू हैव डन आफ्टर द एग्जाम्स. और आराम, बीकॉम एग्जाम, ओह दैट्स बैड. ओके, पार्टी, ओके, ट्रेडिंग, सीरीज, शॉपिंग, ओके, विलेज, नेटिव प्लेस. अच्छा, जलसा किया, चिल, ओके, applied for semi-qualified job. Some serious people in this session looks like, okay.
ठीक है, बढ़िया। खाना खाया, तो इतने दिन से खाना नहीं खा रहे थे क्या तुम? लाइक खाना खाया, ओके। हेल्प डेड इन हिज बिजनेस, ओके। सीवी मेकिंग, फॉलोड सीए मॉन्क एंड यूट्यूब, बहुत बढ़िया, तुम ही हो मेरे बेस्ट फ्रेंड। ओके, अच्छा यूट्यूब पे भी बता सकते हैं यार, डेफिनेटली यू कैन पुट इट ऑन अ यूट्यूब चैट आल्सो, विल बी रियली हैप्पी टू रीड पैरेलली, है ना? ओके, टाइम पास, okay, got it. Search for criteria for articleship in a big four, okay. Web series, bowling, finally घर का खाना खाया, okay, got it. चलो, great. घर का काम घर वालों ने पकड़ लिया लग रहा है तुमको, okay, not a problem. Yes, so I got to know what you have done after the exams were over, and definitely what all things you have done. Now, this session is very important for two type of audience, है ना? दो प्रकार के ऑडियंस के लिए सेशन बहुत रिलेवेंट है, right? Of course it's relevant for third type of audience also, but two audience will relate it more. Number one type of audience, those who is sure about that they are going to be clearing an exam, okay, which is I think 10-20% को पता है कि भैया देख अपन पास हो रहे हैं, ठीक है, और 30% ऑडियंस नो कि अपन पास हो रहे हैं. सेकेंड टाइप ऑफ ऑडियंस इज दे नो दे आर गोना बी गेटिंग पास, बट वो अगरबत्ती चढ़ा रहे भगवान को कि भाई देख लेना भगवान जी थोड़ा सा, और इंस्टीट्यूट का पेपर चेकर थोड़ा लीनियंट हो जाए, तो डेफिनेटली विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स आउट, राइट? तो सेकंड टाइप ऑफ पीपल, दोज हु आर नॉट श्योर बट यस होपिंग फॉर दैट कि डेफिनेटली दे विल क्लियर द एग्जामिनेशंस. Third type of audience which is there, I don't know, is there a voice break from my end? But yes, third type of audience which is there is like, sir, I am not sure, I'm not going to be clearing the exam. तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं रहेगा, जो जिनको पता ही है कि भैया वो पास नहीं होने वाले, ठीक है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट मच रिलेवेंट फॉर यू, बट यस यू कैन जस्ट टेक अ गुड लर्निंग फ्रॉम दिस सेशन. Now what all things I'm going to be covering in this session? I'm going to be talking about in very detail what all places you can apply for internships, right? How you can apply for internships, how I'm going to be covering in very detail. So I want your attention in this session. If you feel like something has been missed out, definitely you have a chat box available in front of you. You can just type it in a chat box. Hey, sir, this is something which I missed, or this is something which you have told very fast. Can you please repeat? Okay. हाँ, डेफिनेटली आई टेल रिजल्ट कब आएगा. समवन लाइक रिजल्ट कब आएगा ये बताओ पहले. अरे भाई रुको जरा, सबर करो, राइट? Second thing which I'm going to be talking about, what all things you can do during this free time, how to utilize this free time out, and how to ensure that you can land up into a dream companies which you are trying to mention at the start of a session. I hope you remember your dream company. ठीक है, you've just mentioned it out. ठीक है. Now, let us start with the very basic thing where a lot of you are worried about, and most of you are thinking of, sir, this is something, if you tell me this thing out, definitely I'll be able to understand a lot of things. But before I start this thing out, I would ask you a simple question. Since every one of you is here, every one of you wanted to get into good companies, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको अच्छी कंपनी में नहीं जाना है. I would ask you a simple question and you need to answer it in a chat box. Definitely imagine that you are a CFO of a company, or imagine that you're owning one company and you want to hire a semi-qualified CA or a chartered accountant. आपको किसी भी व्यक्ति को हायर करना है. What are the qualities which you would look into a candidate or a company, or which are the qualities which you will look into a candidate before you're going to be hiring? Right? What are the qualities? Just let me know. Definitely, we are going to be discussing these things in detail, and I'll just map these things out with the solution which I'm going to be giving. What other qualities do you think you are going to be looking into a candidate before you're going to be hiring a candidate out? Great. CA degree देखोगे, अच्छा बेटा. Okay. Skill sets, communication, confidence, smart work, dedication, knowledge. Definitely, if you'll participate in the chat box, guys, the chances of you getting into good companies will automatically increase because you have started thinking into that zone, right? Okay. Someone is saying communication, technical leadership, adaptability, okay, productivity, good leader. Okay. So a lot of things which are there, but since I being into placement industry for almost 3 odd years, right? You name the company, we have placed the people out there. Definitely, I'll tell you out once we'll go to LinkedIn as well. So what all things the companies look for? This is something which is very interesting for you guys, and that is which I called as 6 plus 2 different qualities which companies look for into a candidate. 6 plus 2 different qualities which company looks for into a candidate. First is a problem solving skills. Given a problem, can you solve it?
Given a problem, can you solve it? I'll give you a problem statement. I don't know how many of you have attended my networking session on Saturday, where I give a problem statement saying that the revenue of a company is decreasing. Can you give me a solution? Right? If you can solve this type of problem, definitely you are a problem solver person, and we are going to be hiring you based on this. See, based on this skills, also lot of roles and positions are going to be opening. Just giving a small example, we'll have a detailed discussion once we are going to be having a domain-wise session. जैसे कि if you can solve the problems, so you can easily fit into FP&A role, you can fit into a management consulting role, because that is something these guys are going to be looking for. I do know that many of you will think like, यार ये FP&A क्या बोल रहा है, management consulting क्या बोल रहा है. Even I also, when I cleared, trust me, I didn't know it, but I'm putting this jargon words into your mindset so that definitely in upcoming sessions, which is I think on 28th, we are 28th or 25th, which is on domain wise guidance, I'm going to be covering those in detail. But you should be start able to understand कि देखो भैया CA बनने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो I'm going to be covering those things in detail out. Second thing which every company looks into, do you have a good leadership experience? Just a small example. During your articleship days, please understand, you were working under someone. I hope you agree on this. आप किसी के अंडर काम करते थे, आपके ऊपर एक सीनियर होता था. But since you are going to be a qualified chartered accountant in upcoming days, definitely you are going to be expected to be a good leader. Hello. You're expected to be a good leader. So if you don't have a leadership qualities, I'll think twice to hire you before I hire you. Simple. So I'm going to be checking your leadership qualities, right? Third, can you bring an impact into the things out? क्या आप किसी भी चीज में impact ला सकते हो क्या? Right? Say for example, if you have during your articleship days, were you able to save the taxation of a client, or were you able to give a desired output? Say for example, you're doing an internal audit. क्या आपने internal audit के मदद से client को कुछ बताया, something new? Were you able to bring the impact on a client? Right? Fourth, do you have a diversity or diverse experience out, or given a challenging situation, are you able to solve it out? Okay, that is a fourth thing out. Fifth, the most important, which no one talks about, especially during a CA journey, and that is a communication skills. Trust me, this is the very important parameter which you guys genuinely need to work during this upcoming days till the dates, till the time your results are out. I'm going to be discussing the dates of your results as well. Don't worry. I'm also going to be telling you timelines के कब क्या चीज होगा. ठीक है? And the most important nowadays, which no one speaks about, is finding out references. अरे समझो, नौकरी तब मिलेगी जब चाचा मामा कोई पहचान वाला होगा. 80% of a job vacancies, 80% of a job vacancies filled through references only. आज की तारीख में भी, even it is for a qualified CA, semi-qualified CAs or articleship. ठीक है? Mark my words, you need one right reference to get into one right company. How many references you need? One right reference to get into your dream companies out. Now, how this is relevant for the duration, which is till the time of your result, I'm going to be relating everything out, and I'm going to be talking about each and everything in detail. I want you to also make notes so that you remember these things out. And with this, definitely you'll need a good academics and a big brand names. For this, I'm going to be discussing for next 5 to 10 minutes in a while. But yes, what you need is a good academics. Now, एग्जाम जो दे दिया वो दे दिया. अब हमको पता नहीं कि हमारा रैंक आएगा कि नहीं, है ना? ऐसा कोई होगा भी नहीं कि भैया कि मेरा रैंक नहीं आया तो मैं फिर से सीए फाइनल दूंगा. ऐसा कोई नहीं होगा, राइट? इफ यू आर क्वालिफाइड सीए, यू आर क्वालिफाइड सीए. आप ऐसा नहीं बोलो कि मैं फिर से रीअटेम्प्ट करूंगा सीए का एग्जाम. नो, है ना? ऐसा कोई है कि यहाँ पे जो सीए बनने के बाद भी फिर से बोलेगा नहीं नहीं सर, मेरा है ना इस बार रैंक नहीं आया, मैं सीए बन तो गया बट फिर से मैं सीए फाइनल दूंगा? Anyone in the house? Ideally, I think no one is there, right? No one will dare to do it. So academics is something which we cannot work on, but what we can work on now is building a big brand names. Okay, now is a time, please understand and mark my words. Now is a time where you can utilize this time properly. And that is why on my banner, if you could see, I've written, congratulations, you are one step ahead. Because you have taken the effort to join in this session. You have taken the effort to skip the IPL match and sitting here. What does that indicate? That indicates that you're a serious person in your life and genuinely you want something big. Okay, I'm really happy to see this out. Now, moving forward, what is a common goal? What is common goal which every one of us have here is start early, practice enough, get guidance, stay consistent, and become unstoppable. Right? That is a guide. That is something which a goal which you should carry for this next upcoming 50 days till the time your results are out. अगले 50 दिन आपका यही गोल होना चाहिए.
ठीक है. Now, since I'm discussing about a lot of things, I'm also wanted to put you out some statistics. How does the things works? Once what all things will change after you're going to be qualified, right? So every time the campus placements happens for the companies, where you could see the statistics of the people register for campus, right? जैसे कि February में 12,000 CS passed out, 10,000 people registered. Out of it, 54% people were able to get placed through campus. 49% got placed through campus in the 2021 attempt. So that is how it goes. तो हमेशा 100% नहीं होता है. Few of the people need to find out the jobs off campus also. That is also just wanted to highlight out. So if you want to get into good companies, what you need to beat the best people, best mindset of this world. Simple. Now let us come to the timelines of your CA final. तक 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 तक. Right, sir. ये discuss मत करो. बाकी सब चलेगा. Right. Let us see. We should know everything in detail out. So what I've done is that I've put the past patterns. कि past में क्या हुआ था? Because history will repeat itself. है ना? So that is gonna be there. December 21 में, if you could remember your dates out, the results were out after 53 dates. Campus start हो गया था 28 days बाद, 10th March से the campus got started. Similarly for May 22, right, 47 days के बाद results आ गया था. May 22 में, if you remember, the exam ended on 29th May and the result came on 15th of July. ठीक है. And campus registration generally starts after 5 to 7 odd days after the results are out. मतलब result आएगा अगले 7 दिन बाद campus का बोलेगा कि CV दे दो. ठीक है. You can see lot of things are going to be changing once you're going to be qualified. You are going to be running short of a time. तब आप बोलोगे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं डालने के लिए. See, this is what the genuine problem which you students face, and now is the time where you need to build all this, and that is why we are sitting in this session to understand कि भैया वो सब चीजें कैसे build करें. ठीक है. Similarly, this is important, right? Right, that is something which you are waiting for. Someone asked me, sir, what is a timeline? This is a timeline. This is an approximate sign. Okay, approximately it will come around 6th of July. Right. Similarly, it will go for a CA Inter as well, because last time I think final and CA Inter results were together. So this time also it will be mostly around 6th of July. Your campus will start around 5th of August, but the registration of a campus will start from 11th of July. And the best thing again, I'm going to be telling you out, result के पहले, right, इन दोनों डेट के बीच में अभी मैं एक वीडियो डालूंगा जहां पे ICI कैंपस का ब्रोशर आ जाएगा. ठीक है. You'll just keep eye on my channel. Definitely you'll be able to find it out. ठीक है. तो that is something which again I wanted to tell you out कि भाई ये सब चीजों में ध्यान रखो आप. This is something which is important for you. Now, what I'm trying to tell you is that you have a timeline of 17th. So today is I think 23rd, right? 23rd May to mostly 6th of July. Right, you have this timing, this much timeline is left with you. Mostly I would consider, say for example, 45 days. 45 days timeline you have with yourself, where you can utilize this time to build your portfolio, to build your CV. Right now, why I'm referring this, please understand. Ask yourself a one simple question. Everyone wants a good job. Everyone wants the best job into the companies. Everyone wants the highest package of the companies out. Right, I will ask you a simple question. Why I am different from others? मेरे पास ऐसा क्या लोगों से अलग है जो मेरे को कंपनी ज्यादा का पैकेज देगी? If you could find this answer out, definitely you will get a highest package, right? अगर आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो ना कि मैं लोगों से क्यों अलग हूं, don't say कि I am a chartered accountant. Everyone will be a chartered accountant on 6th of July. I am just considering approximate date. But why you are different from others? भाई तुम्हारे पास क्या ऐसा अलग है? If you could genuinely answer this question by the end of 6th of July, mark my words, you will be having the highest package in your hand. Okay. And that is why I'm going to be discussing everything in detail. What is something which you can do during this time so that you can leverage your profile? The first thing which I'm going to be discussing out, I've created a good chart, right? Definitely you can take a screenshot. I'll also share this chart over an email, right? बहुत detail में discuss करेंगे. Don't worry, right? But I want your 100% attention, guys, and definitely I would request every one of you to please pay attention, and parallel, if you feel like making notes, you can make notes. Okay. Now, what all things, academics is something which you cannot change. What is something which you can change is bringing out big brand names. ठीक है. अब brand names कहाँ से लाना? सबसे पहली चीज, through internships, NGOs, freelancings, and other activities. Through NGOs, freelancing, other activities, and internships. NGOs are simple. I've created a list of good NGOs which you can be a part of. Try to register yourself with these NGOs.
and try to create an impact. Okay, these are the list of good NGOs which are there, right? अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है, go here and please try to create an impact. Do you remember the good qualities which companies will look into is a impact driven. तुमने कितना सोसाइटी में मदद किया, right? Don't become a sales caller. हेलो भैया, हाँ हम इस एनजीओ से बोल रहे हैं, आप 1,000 रुपए दे सकते हैं? नहीं, that is not an impact which the companies are going to be looking for. Have you created or conducted some donation drives? Have you helped some people out? How the organization work? That is something which companies are going to be looking for. So this is a list of good NGOs. You can just have a screenshot or just note it down. So you can join NGOs. That is point number one. Okay, so I'm just closing it out. Second, you can be a part of good internships program, right? Now let me come to this internship in detail. I've just created a detailed list of internships. So let me start one by one with a LinkedIn. Okay, so I'll go to LinkedIn and I'm going to be explaining you how you can find out good internships through LinkedIn. Okay, so let me again go through my LinkedIn profile, which is there. Okay, and I'm going to be telling you how you can utilize this LinkedIn to find out a good jobs. Okay, now very simple. I don't know how many of you have created their account on LinkedIn, but if you have created it, nothing like it. Just wanted to ask, how many of you have created your account on LinkedIn, by the way? If you have created, you can just write created or yes in the chat box, please. How many of you have created your account on a LinkedIn? ईमानदारी से बोलना, नहीं तो गीता और बबीता की कसम आ रही है आपके पास, ठीक है? बबीता कौन? तारक मेहता वाली, ठीक है? You can put your hands down, no problem, right? Umang and others, right? Parth, Akash is clapping. I don't know why. If you would turn on the videos, guys, right? जो connected, I will really happy to enjoy. अच्छा, देखो first thing, ध्यान दो. The first thing which you're going to be doing the time you create your profile out, right? Request every one of you to have a customized LinkedIn profile, which most of you don't have, right? यहाँ पे ना, what you can do is that you can just go to edit public URL. Once you go to edit public URL, you can just find the edit option here, और इधर एक number आ रहा होगा तो उसको हटा देना. So that will make your profile customized. ठीक है? That will make your profile customized. So I'd request every one of you to have a customized LinkedIn profile. अब ध्यान दो कि LinkedIn के थ्रू जॉब कैसे लेना है. The first way is click on open to, right? The time you click on open to, right, you will be able to find a new job, right? यहाँ पे आपको मिलेगा find a new job. The time you click here, what you need to do, put a title कि भाई मेरे को कौन से टाइटल का जॉब चाहिए, right? से फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए अकाउंट या अकाउंटेंट का जॉब चाहिए, ठीक है? मुझे ऑन साइड, ऑफ साइड, हाइब्रिड, रिमोट, यू कैन जस्ट सिलेक्ट इट आउट. यू कैन पुट अ मल्टीपल लोकेशन विच आर देयर, राइट? स्टार्ट डेट कब चाहिए मुझे? इमीडिएटली. और क्या चाहिए मुझे? भैया इंटर्नशिप चाहिए. क्लिक ऑन इंटर्नशिप्स. आफ्टर दैट इज डन, टू थिंग्स आउट. डू यू वांट टू टेल टू एन एंटायर मेंबर कि भैया पूरी दुनिया को बताओ शिवम पलन को जॉब चाहिए? तो क्लिक ऑन ऑल मेंबर्स विच विल कम विद ओपन टू वर्क बैनर. और सेकंड, ओनली यू वांट टू टेल टू द पीपल आउट कि भैया देखो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो ओनली रिक्रूटर्स विल कम टू नो दैट शिवम पलन इज लुकिंग फॉर अ जॉब. ठीक है? अच्छा, आई डू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा फास्ट हो गया, आई विल रिपीट इट आउट, डोंट वरी. ठीक है? जस्ट क्लिक ऑन, गो टू योर प्रोफाइल, यू विल फाइंड एन ऑप्शन टू ओपन टू फाइंड अ न्यू जॉब. डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू इट आफ्टर द सेशन, नॉट नाउ, राइट? अभी करोगे तो खिचड़ी मच जाएगी दिमाग में. ठीक है? व्हाट यू नीड टू डू, पुट अ टाइटल, राइट? वॉट एवर द प्लेस लोकेशन यू वांट टू पुट इन. इमीडिएटली इंटर्नशिप चाहिए तो इंटर्नशिप, किस किस को दिखाना है, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑप्शन, क्लिक ऑन सेव. ठीक है? अब कोई कह रहा है सर सेव करके दिखाओ, शर्म आ रही है, मेरे को जॉब नहीं चाहिए भाई. ठीक है? तो यू जस्ट राइट विथ योर प्रोफाइल, डेफिनेटली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रोफाइल को एक्टिवेट कर दिया कि भाई मुझे जॉब चाहिए. सेकंड थिंग, वंस यू हैव क्रिएटेड एंड एक्टिवेटेड अ प्रोफाइल, रिक्वेस्ट यू टू क्रिएट अ गुड पेज. आपका एक अच्छा सा पेज होना चाहिए, मतलब एक प्रोफाइल होनी चाहिए where the people could come and just read it out and find out this person is genuine. What you can do, you can just refer my profile as a basis and create a good profile which is there. Third thing, what you need to do, very important, go to job sections, right? Once you go to a job sections, what you need to do again, you can just put multiple things. Jaise ki I want internship, so what I can do, I can just write CA intern, internship, where I want CA internship in India. The time you will be able to put it out, you will be able to find out some results which are there, right? यहाँ पे आपको कुछ results मिल जाएंगे. CA internships in Bangalore, CA internships in Navi Mumbai, right? Accounting internships, right? Can you find it out? You'll find a lot of internships which are there. ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत सारी internships मिलेगी, right? There will be few internships also which is for 2 months, 3 months, 4 months, right? You just need to figure it out and filter it out. One thing which I'd recommend you to do is you can just set an alert so that you can also get an email, है ना? आपको email भी आ जाएगा LinkedIn के थ्रू
कि भाई देखो ये जॉब वैकेंसी ओपन हुई है, आपको इंटर्नशिप चाहिए तो ले लो, ठीक है। तो एक चीज बताया मैंने, सबसे पहला प्रोफाइल को एक्टिवेट करना, सेकंड यू कैन जस्ट गो टू जॉब सेक्शंस. Now here you can put a multiple words which are there, like here internships, internship for chartered accountant, finance internships, right? It's like a keywords, है ना? How better keywords you can put it out. The more keywords you'll put in, the better chances that you're going to be getting a more vacancies which are available. ठीक है? The second thing which I've mentioned it out. ठीक है? Third thing, what you can also do is that you can use the search bar which is available. सर्च बार को भी यूज कर सकते हो कि मान लो मुझे ईवाई में इंटर्नशिप चाहिए, तो आप सर्च करो. अभी मुझे नहीं पता ईवाई में है कि नहीं, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट राइट ईवाई, कंपनी को सर्च करो, राइट. फिर यहाँ पे तुम इंटर्नशिप सर्च कर सकते हो. एक सेकंड दफा, होपफुली आई विल गेट इट, आई डोंट नो, बट आई विल जस्ट सर्च इट आउट बेस्ड ऑन द पोस्ट विच इज देयर, है ना. यहाँ पे पोस्ट पे फिल्टर कर देना. अब कुछ आएगा तो रहेगा तो मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा, राइट. इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है, बट अब पता नहीं है जेन्युइन है कि नहीं, बिकॉज ये ईवाई के आईडी से है कि नहीं. आई जस्ट नीड टू चेक इट आउट. ठीक है, इंटर्न्स हायरिंग ये सब दिख रहा है, कुछ है, राइट. तो यूल बी एबल टू फाइंड आउट सम पोस्ट, विल बी एबल टू फाइंड आउट समथिंग, राइट, अदर थिंग्स आउट. तो कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट, विच इज आई कैन सी, राइट. तो डेफिनेटली दैट इज दैट वे यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट. ठीक है. नाउ आई वाज फ्यू एट द स्टार्ट ऑफ सेशन, डेफिनेटली आई वाज रेफरिंग टू कि भाई you name the company, I place the people out there, I can definitely show it to you. What you can do, you can just write EY, right, company नाम लिखो, you can just write my name, I've placed the people out in a lot of companies. You'll find a lot of posts, अरे एक सेकंड ना, people, you can find out a lot of posts where my students have got into that companies. जैसे अभी 8 महीने पहले का है, ठीक है. अब मैं रिसेंट डाल देता हूँ, लास्ट 1 मंथ में, ठीक है. लास्ट 1 मंथ में कितने हमारे कैंडिडेट्स गए, देखो एक गए 3 हफ्ते पहले, ये 1 हफ्ते पहले, ये तो मेरा ही पोस्ट है ना. तो 2 लोग गए, राइट, सिर्फ एक कंपनी. तो दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन फाइंड इट आउट. अगर मैं पूरा हटा देता हूँ इसको, तो यू कैन फाइंड हेल लॉट ऑफ पीपल. मतलब वो लिंक्डइन थक जाएगा, इतने इतने सारे लोग हैं, राइट. यू नेम द कंपनी, आई प्लेस द पीपल आउट देयर, इट्स स्टिल लोडिंग. ठीक है. जो कंपनी आप बोलो, आपकी मन मर्जी, चैट पे जो बोलोगे वो कंपनी मिल जाएगा. इफ यू सेल आईटीसी, विल बी एबल टू फाइंड आउट आईटीसी आल्सो, right. If you will say Adani, you will say Adani also. So that is something which I give to my students out, right, कि भाई आप इसको रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो later on. So that is which is there. अच्छा, कोई बोल रहा है बेनिन कंपनी, या वी हैव आल्सो पीपल इन बेनिन कंपनी आल्सो. ठीक है. तो दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू यूटिलाइज बेस्ड ऑन लिंक्डइन. तो लिंक्डइन में 2 चीजें आपको यूज करना है. सबसे पहला, द फर्स्ट इज व्हिच आई हैव टोल्ड यू, एक्टिविटी ऑफ प्रोफाइल. सेकंड, यूजिंग अ जॉब सेक्शन व्हिच इज देयर. ठीक है. 2 चीजें जो आपको हेल्प करेगी लिंक्डइन पे. आई होप दिस फोरम इज क्लियर टू यू. ये फोरम आपको पता पड़ गया लिंक्डइन को कैसे यूज करना. yes or no in the chat box if you've understood it. And I hope the speed is okay, or if you want me to increase the speed, I can also speak fast, or if you feel like I'm going fast, you can just say that sir thoda delay, right. Speed is okay. Thank you. I hope you guys also learning it. Okay, great. Okay, got it. Thanks, going great. Acha, now since अब एकदम ऐसे comfort zone में बैठे हैं, few of them are watching me like this, and especially for the people those who have kept their videos off, I don't know how they are watching me. Some कोई ऐसे बोल देख रहा है मुझे ऊपर फोन रख के, कोई ऐसे बोल रहा है बोल, हाँ मस्त बोल रहा है. I know I was also a student, right, and definitely to let's play a small game, है ना. थोड़ा सा आपको जगा देता हूँ मैं, right, so that you can uh, you can enjoy it also. ठीक है. Let's have a fastest finger first, है ना. Let's have a fastest finger first. I want every one of you to be very alert and ready, right. The person who will give a correct answer will get definitely a something special, a small gift worth rupees 1500. क्या फिर से बोलो कितना, 1500, right. So let's see who can get this out. The question is in front of your screen. 3, 2, 1, go. Count the number of triangles in the picture and post your answer on a YouTube live chat, because YouTube live पे भी लोग हैं. So I want every one of you, not on a Zoom chat, on a YouTube live chat. The first person who will give a correct answer is going to be winning this special gift. ठीक है. Count the number of triangles which are there. And post the answers on the YouTube live chat. Let's see who can answer this first. अरे YouTube लाइव चैट पे बेटा, जूम वालों को YouTube पे जाके देना है बेटा. जूम वालों को YouTube पे जाके देना है.
जूम वालों को यूट्यूब पे जाके देना है, जूम वालों को यूट्यूब पे जाके देना है। जूम वालों को यूट्यूब पे जाके देना है। फटाफट फटाफट देखिए कौन है आज विजेता इसका। हु इज गोना बी अ विनर फॉर दिस। निखिल बोल रहा है जीतूंगा तो मैं ही। क्या बात है, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। मुझे नहीं पता कपिल कैलकुलेटर से क्या कर रहा है। अच्छा मोबाइल। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। फटाफट 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 आंसर दे दो यार। देखे जरा, कोई तो आंसर दे दो। अच्छा एक व्यक्ति ने तो पूरे नंबर लिख दिया, एक से लेके कंटिन्यूसली वो नंबर ही लिख रहा है। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। लास्ट लास्ट 10 सेकेंड गाइस। नेहा बोल रही है, काश मेरा सही हो जाए। चलो ठीक है, देखते हैं। योगिता बड़ी टेंशन में बैठी है। योगिता कोई बात नहीं, मम्मी खाना लेके आएगी, टेंशन मत लो, है ना। यस, ऐश्वर्या इज ऑन फुल कॉन्फिडेंस, आई एम गोना बी गेटिंग राइट। ग्रेट। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, it was a great activity, and let's see who is gonna be winner. I've taken a screenshot who has given a right answer, and definitely I'll tell the answers at the end, right? Who was the correct winner out. Now moving forward to the next forum where you can apply, right? LinkedIn is done. Second good forum where you can apply for internships as of now, because we want to build up big brand names, or wanted to have a brand names in our CVs. And second place is Internshala. Many of you have heard about it, but I don't know how many of you have applied it or have went through that portal out. So I'm going to be going inside that portal, and I'm going to be telling out how you can find out good internships. So the time you will log in into this portal, you'll get an option. The link is there. I'll share the link in the chat box for the people those who are connected. So what you can do, right? You can just go to internshala.com, right? There will be able to find out a lot of internships which are there. Now, what you can do is that you can just untick this. Untick this, and you can just select based on what all jobs I want, like accounting, accounts job, chartered accountant, right, or finance. And I can just put this filters out, and based on the stipend, say for example भैया अपन minimum अपने को 6,000 चाहिए, right? And you can just able to find out some internships for 3 months, 2 months. You can see देखो 2 महीने 3 महीने का internships है, where you can just do this internships to cover the gap which you had in your CVs. Or if you could find out something great, right, कुछ अच्छा मिल गया, तो definitely you can just see this out, है ना। कुछ कुछ ना कुछ you'll find it out definitely. See, I can find out lot of things, right? 12,000 में कुछ मिल रहा है, 6 महीने का है, right? Few of them are for 3 months, few of them are for 6 months, right? तो you just need to figure it out, है ना। तो जैसे ये थिंग देखो देखो, it's for the 3 months which are there. But इसमें it's very important to have a good profile where you need to talk and tell about the things out. I can see it's a whole lot of bunch which is there. ठीक है, तो just put the right keywords, you'll be able to find it out. I've shared the link in the chat box, right? YouTube पे मैं share कर दूंगा, don't worry. So second forum is Internshala, which is there. So यहाँ पे just you need to create account, put a right filters, right? And if you want, say for example, मुझे दिल्ली में ही चाहिए, मुंबई में चाहिए, you can just put a filter out based on location, right? You can see more filters out, starting date, end date, है ना? So you can just put a more filters out for this as well. The second thing which is related to this, ठीक है? Third place where you can build a good internships, right? Where a lot of my students have done it in the past, right? And one of my student got into BCG also, right? So he just tell me out कि sir, it would be great if you could tell your students to have a 1 day BCG internships, right? It's a virtual internship. कुछ ऐसा नहीं है कि आपको वो मिलेगा, but you'll get some assignments and a projects which are there. So BCG is a top consulting firm. I don't know how many of you are aware of consulting, but it's a top consulting firm. I don't worry, I'm going to be explaining on 25th ka session what is consulting, how does consulting works, what are the things you need to do when you are going for a consulting domain, how you can build your CVs out. I'll just brief you out on that today. But I would request कि having a good brand names in your CVs is going to be helping you out. So you can do a 1 day virtual internship with a BCG. It's with the BCG only, right? Just need to sign it out, and you'll just get the experience. So what I'll do is that again, I'll share the link in the chat box, or careers.bcg.com/virtual experience. You can just search it out. I've shared the link in the chat box for the people those are connected. And give me a pause. I'll also share this for the people those are on a YouTube live.
so that they can also get this links out. Just a second. Okay, I think the people have got this link as well. ठीक है, तो दैट इज अ थर्ड प्लेस वेयर यू कैन जस्ट बिल्ड, मतलब उससे कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स जस्ट फॉर अ सीवी बिल्डिंग. दिखता है ना आजकल की, हाँ ये किया है. A similar way, right, there's a forum called as the Forage, right? Forage is also giving a lot of free internships, right? But it's not going to be a paid, but लोग करते हैं सीवी में दिखाने के लिए कि मेरे पास बिग फोर का नाम आ जाए, या सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग के लिए, so that they'll get some dummy data out, they'll work on that data out, and they'll put it in their CVs. ठीक है, तो दिस इज अगेन द फोरम विच इज देयर. आई जस्ट शेयर द लिंक ऑफ द फोराज. इट्स सिमिलर टू द बीसीजी वाला, राइट, बट इसमें यू विल फाइंड लॉट ऑफ कोर्स कैटलॉग एंड अदर कैटलॉग विच इज देयर. वन डे इंटर्नशिप्स मिलेगा आपको. ठीक है, ज्यादा उसमें घुस मत जाना, बट हाँ, जस्ट गेट अ सर्टिफिकेशन डन. वन डे यू विल नीड टू इन्वेस्ट. कोई पैसा नहीं देगा. Now a lot of them are get confused. I don't know, last time one student came to me saying that, सर मुझे बहुत बढ़िया इंटर्नशिप मिली. मैं बोला क्या? बोले सर मुझे है ना पैसा दे रहे, मांग रहे हैं वो लोग, और कुछ तो करवाएंगे, बोले कुछ तो सिखाएंगे. मैं बोला वो इंटर्नशिप नहीं होती है बेटा. इंटर्नशिप में तुमको पैसा मिलता है, तुमको पैसा देना नहीं पड़ता है. ठीक है, तो प्लीज 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 डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस थिंग्स आउट. सो दैट इज समथिंग व्हिच आई जस्ट वांट यू टू वार्न. Next forum where you can go and get a good internship is angel.co, right? Angel.co is again one of the good forum where you can go and find out this internships. Unfortunately, fortunately, here you need to create an account which is there. And I was getting a lot of bored to create and put all this detail out. But this is also a good forum because यहाँ सब CV डालना है. Right, so you just need to put all this detail out. So you can just also visit this angel.co, right? If you want, I can share this link again in a chat box where you can just create your profile and put your account details related to the same. Ek second though. So this is I think fourth one which I'm telling you. So यहाँ पे भी आप account बनाओ, you will be able to get it out. Good internships. Next, which again I was referring to, is Upwork. Upwork में lot of people are getting a foreign outsourcing work. A lot of my friends are working here where they are earning in dollars, minting money is out. Trust me. मतलब if you're good at some particular skill sets like accounting, financing, or side income भी कमाना है, even if you're qualified, so you can create your account at Upwork because a lot of people have created their account and they are minting money. So you can see she has earned 11K dollar. So definitely you can multiply in. तो ये देख सकते हैं ना रिच कितने हैं. ये देखो 3,28K into this. So definitely she is a content writer and editor and this thing out. So you can also go to upwork.com, right? It's again a forum where you can just try it out. So it's again a good forum and trusted forum which is there. तो ये भी आप चेक कर सकते हो, है ना? ओके, तो अपवर्क का भी मैंने शेयर कर दिया है ना? तो व्हाट ऑल फोरम्स आई हैव कवर्ड. ठीक है, सबसे पहला लिंक्डइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकंड इंटर्नशाला, है ना? बीसीजी वाला बता दिया, फोराज का बता दिया, राइट? angel.co एंड दिस, है ना, अपवर्क. तो इसके अलावा यू विल फाइंड लॉट ऑफ लिस्ट व्हिच इज देयर, राइट? अब सबका वेबसाइट जा के नहीं बताएंगे. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज दैट अगेन आई हैव डन सम गुड वर्क इन माय लाइफ फॉर यू गाइस वेयर यू कैन टेक अ SS, right, screenshots, and you can just see this different forums where you can find out good internships. Right, यहाँ पे मिल जाती है. Mostly the people will find it out. Definitely camonk has also launched its internship program which is there. So if you are interested, you can also be part of our internship program because every year we launch it. This is our 6th batch of internship which we have launched. Okay, now this is sorted where to apply, है ना? This is sorted where to apply. But I would say that if you genuinely wanted to good companies, right, it's very important to have a big brand names. And I think, don't worry, I'll just mail this PDF file to you guys. Don't worry, you're going to be getting it over email. Okay, so just check your email properly. Okay. Now, a lot of students came to me and every time they say that, कि sir, है ना, मुझे है ना, कि I wanted to have something different in my life. What I wanted is कि मुझे है ना जहाँ जाना है, say for example, many of them have a biasness in their mind or few of them will create a biasness in upcoming days. जैसे कि many of you say that कि सर मेरा आर्टिकलशिप है ना स्टैट ऑडिट में हुआ या XYZ डोमेन में, बट मेरे को ना उसमें काम नहीं करना है आगे जाके. हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस, है ना? सर मेरे को ना मतलब जिस डोमेन में आर्टिकलशिप किया है ना सर उसमें नहीं जाना है सर मुझे. हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस आउट? हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस आउट? Just write feel in the chat box. I'll be able to understand.
अच्छा, अब कोई बोल रहा है अब हमारे दिल की बात कर रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? सर फाइनेंस में किया है बट ऐसा लगता है कि कुछ अलग करूं, राइट? और राइट, लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू गाइस थिंक ऑफ, राइट? एंड डेफिनेटली हाँ, देख रहे हो, अरे बाप रे, आई कुड सी मोर टाइम, मोर फील्स देन द नंबर ऑफ पीपल हैव जॉइंड इन। अब समवन सिंह, मेरा दर्द पकड़ लिया, कौन था ये? हर्ष, ओके हर्ष, चलो चलो, हैप्पी टू रीड दिस आउट। Now, there was a guy like you, right? His name is Avkash Shah. Definitely, I'll just share his profile and you'll be amazed to see this out. ठीक है, तो ही इज अ गाय, ही इज वेरी स्मार्ट, आई लाइक हिज प्रोफाइल एंड पर्सनालिटी आउट। इसने जीवन में है ना दो ही लिंक्डइन पोस्ट लिखे आज तक, राइट? ही हैज ओनली रिटन 2 लिंक्डइन पोस्ट इन हिज एंटायर लाइफ। ठीक है, लेट्स सी व्हाट ही हैज डन, राइट? Let's see what he has done. Just a second, let me share the sound also so that you can understand it and feel it in a better way, right? इसने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की है ना, he has just built his profile out and he has mailed his CV in a different way by creating a video showing that, see, I'm a video designer, I'm good at this, hire me for this. Okay, second post which he has written in his life saying that, thank you Cred for hiring me today. I hope every one of you have heard about the name, राइट? लेट्स सी व्हाट ही हैज डन। ठीक है, पहले देखते हैं इसका सीवी कैसे बनाया इसने, है ना? अब इसको मैं साउंड प्ले करूंगा तो मेरे वीडियो पे आने वाला है कॉपीराइट, बट ठीक है, अब आ गया है तो प्ले हो गया गलती से, तो ठीक है, अब कॉपीराइट आने दो इस वीडियो पे। I hope people have got this the way he have drafted this video. I hope you're able to read it and understand it. It's drafted in such a way that, see what I can do. Right? Nowadays, this is what the people and entrepreneurs want. This is what the companies want from a candidate, to be very honest. है ना? आपका सी, मैं हमेशा बोलता हूँ, see, ask yourself a simple question, why I am different from others. The time you'll get answer, you're going to be hired. ठीक है, that is something which I want you to take from this session. On the second post which he has mentioned is, see, this is something which I've done. I'm joining a Cred. Right? Now I'll ask you a simple question. How many of you want to have something different in your profile or wanted to build something different in your profile? Right? If you want to do it, just write I want in the chat box, or me in the chat box. Will be really happy to guide you. Right? कौन चाहता है कि भैया मेरे प्रोफाइल में कुछ अलग रहे, और शुड आई शुड हैव समथिंग यूनिक और यूएसपी इनटू माय प्रोफाइल? Great. I think almost every one of you want it out, right? Almost every one of you want it out, right? But the problem here is, please understand, no one is there to guide you, right? No one is there to tell you out कि भाई what you're good at. No one is there to tell you out कि भाई ये तुमको करना है. Same thing I faced it 3 years back when I qualified. Trust me, right? The 3 years back, exactly the same problem. I wanted to get into teaching. कोई नहीं बता रहा कैसे आना, कोई नहीं बता रहा what can I do, what is my niche, what is my forte. No one talked about it, right? So I'll take your 2 minutes of a time to just brief out how we are solving this problem out for you guys, right? And definitely we can then move forward for this session out, right? So what I am working into this space only for almost 3 odd years, right? You name the company, I've placed the people out there, and every year after your exams are over, right, we have 3 to 4 pre-result batches, and we have 6 after the results, we are going to be having a 6 different batches which are there, right? So what we try to do is that we have our interview training workshop, which is solving this biggest problem for this, right? If you see this curriculum which you have divided, right, if you could see this curriculum detail manner which you have created, right, which is covering a 14 days curriculum. This is a 14 days curriculum for a pre-result batch. जो next batch आएगा, which is going to be starting from 12th, right? It's going to be 12 days or 10 days का batch only. The first batch is very premium because it is going to be having a business simulation. What is business simulation? It's a live industry assignment which you're going to be solving. Now, what I am doing here is that I'm calling different industry mentors for you guys. The color green coding, if you could see this out, you will find out best mentors from the industry you're going to be joining in. So someone with a banking who's carrying a 25 years of experience is going to be joining this. He's going to be guiding you कि भाई banking में क्या होता है,
right? Someone who's working as a manager in one of the big four is going to be coming and guiding you कि भाई start audit में क्या होता है. And every session is divided in a very good manner, where we are going to be talking about how to build a resume, we are going to be talking about how to write an email, we are going to be talking about how to build a good LinkedIn profile, we are going to be talking about how to answer the HR questions, and everything is going to be taught practically and in a live environment. कोई recording नहीं, सब live. We are going to be interacting with different mentors, peoples out into this industry. ठीक है. उसके बाद राइट यू विल हैव अ डोमेन वाइज, यू कैन सी दैट हाउ मच फोकस वी आर गिविंग ऑन अ डोमेन वाइज पार्ट. वंस यू गेट अ क्लैरिटी ऑन अ डोमेन वाइज, आपको उस डोमेन का इलेक्टिव मिलेगा जिसके लिए आपको असाइनमेंट और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे which you need to watch and complete and build your CVs out. Once that is done, you will submit your CVs and definitely will review it out and will try to share with the companies out. ठीक है. अब ये बैच से 14 days का नहीं है. We are gonna be there till the time you're gonna be getting placed into your dream companies out. So we are gonna be troubling you out a lot. है ना. बोलने के लिए 14 दिन का है, बट जब तक कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक के लिए आपके साथ रहेंगे. आईसीआई कैंपस होगा, वी आर गोना बी हैविंग अ सेशन फॉर आईसीआई कैंपस आल्सो, राइट. तो हर वो चीज के लिए वी आर गोना बी देयर विथ यू, nothing to worry as such, right? This are the list of mentors those who are going to be joining. If you could see this out, 12 years in FP&A, 12 years in FDD, right? तो ऐसे लोगों से आप मिल रहे हो, right? All these are the premium mentors out which are there, right? तो definitely will be loving them to meet them in person. तो वो चीजें होगा. प्लस इसके अलावा आपका एक कोहोर्ट बनेगा, ग्रुप्स बनेंगे, एंड इसके साथ साथ यू आर आल्सो गोना बी प्लेइंग द बिजनेस सिमुलेशन गेम इन अ फर्स्ट बैच, राइट. Why we are playing the business simulation, please understand, this is going to be helping you to understand how the business works in the real world, and this is going to be helping you to leverage and build out extracurricular activities. बहुत सारे लोगों के सीरीज में extracurricular activities नहीं है, so that is something which is going to be helping you out to build the extracurricular activities which are there, right? Okay, now the question comes as that I think 2-3 questions which are there, I'll just address it out, don't worry, right? So अच्छा, आप जिसको भी, those who are interested, I'm just telling you out where you can go. You can just go to my website camonk.com. Top पे लगा हुआ है which is there, or what you can do is that you can just go to a placement tab, live interview workshop. You can just go here, scroll the page, read everything out which is there, everything in detail, क्या cover होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे कैसे होगा. It's there in the 13 minutes video. I'd request you to read this out and watch it. राइट. इसके अलावा बैच में क्या क्या है, पूरा करिकुलम यू कैन डाउनलोड इट आउट, यू कैन रीड द टेस्टिमोनियल्स ऑफ अ पास बैच ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. यू कैन रीड द फीडबैक व्हिच इज देयर, यू कैन डाउनलोड अ करिकुलम फ्रॉम हियर. फिर डे वाइज यहाँ पे हमारा शेड्यूल डला हुआ है व्हिच इज देयर. और उसके अलावा क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, असाइनमेंट्स है ना, कम्युनिकेशन में दिस इज गोना बी हेल्पिंग आउट, नेटवर्किंग में इट इज गोना बी हेल्पिंग आउट, राइट. व्हाट आर कंपनीज व्हिच हायर विद CMO व्हिच इज देयर, right? What is unique which you are bringing into table? Now few common questions which a lot of you might ask is, sir, ये तो pre-result batch है, what if my results come negative? Don't worry, if your results come negative, you can join the next batch which is going to be November 23 free of cost. ठीक है, सबसे बड़ा सवाल. Second question, sir, will this batch is going to be in English? The answer is yes, this batch is going to be in English. So third biggest question, sir, what if I miss any of the session, will I get the recording? 100% backup is given to you guys. ठीक है, सबका रिकॉर्डिंग मिलेगा, डोंट वरी, नथिंग टू वरी एज सच. ठीक है, तो एवरी डैम थिंग इज गोना बी टेकन केयर ऑफ, राइट. इसके अलावा, राइट, वंस दिस इज डन, एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक पर्सनल मेंटर भी मिलता है, वेयर दिस मेंटर इज गोना बी टेकिंग अ वन-on-one फीडबैक एंड गाइडेंस सेशन विद यू गाइस. ठीक है, तो दैट इज समथिंग व्हिच वी आर ऑफरिंग, राइट, फॉर यू गाइस, एंड दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन डू. नाउ दिस GIR इज फॉर CA फाइनल स्टूडेंट्स. ठीक है, ये CA इंटर वालों के लिए नहीं है. CA इंटर वालों के लिए सिमिलर मॉड्यूल है, बट इट इज फॉर 7 days. उनके लिए 14 दिन इतना रिलेवेंट नहीं है, उनके लिए 7 दिन है, राइट. डेफिनेटली इट्स नॉट फॉर 7 days. अगेन आई एम टेलिंग यू, 7 दिन का लाइव है, उसके बाद डाउट सॉल्विंग, सपोर्ट, राइट, गाइडेंस, बहुत सेशंस होते हैं विच यू आर गोना बी देयर अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो आउट. ये वीडियो देख लो, है ना. दोज आर इंटरेस्टेड, यू कैन चेक इट आउट. आई थिंक रंजीत फ्रॉम माई टीम कैन शेयर द लिंक्स विच आर देयर फॉर GIR. डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड अ ब्रोशर एंड चेक इट आउट, है ना. तो उसमें आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा, तो इसमें आपको एक गाइडेड अप्रोच मिलेगा व्हिच इज गोना बी हेल्पिंग यू टू गेट क्लोजर टू योर ड्रीम कंपनीज. ठीक है, अच्छा, वन मोर अनाउंसमेंट, राइट, जस्ट अ स्मॉल एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर रिलेटेड टू द सेम, राइट. फॉर द पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड, राइट, वी हैव आई हैव आस्क्ड माय टीम to give a special offer to you guys, right. For the people those who are connected, right, it's only valid till, the problem is only valid till tomorrow 8, right. You can use GIR 200 to get the 200 off, right. ये सिर्फ कल तक वैलिड है, उसके बाद प्लीज टीम को फोन मत करना कूपन कोड के लिए, है ना. तो it's only valid till tomorrow. You can just put this code and get 200 off which is there,
इसके बाद I will not get 200 off. The price is gonna be same. And trust me, on a last day, you'll come to me and saying that कि सर प्राइस बहुत कम है आपका 4,000 देने के बाद भी, बिकॉज यूल गेट हेल लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, क्योंकि डोमेन वाइज असाइनमेंट्स मिलेंगे, डोमेन वाइज मेंटर्स मिलेंगे, राइट, सिमुलेशन करोगे, टीम्स मिलेगा, रेज्यूम रिव्यू होगा, पर्सनली आपको गाइडेंस मिलेगा, राइट. तो जो प्रॉब्लम है ना, वी हैव सॉल्व एवरी प्रॉब्लम आउट. ठीक है, तो यू कैन जस्ट नोट डाउन कूपन कोड विच इज देयर, दैट इज अगेन गोना बी गिविंग यू स्पेशल डिस्काउंट विच इज रिलेटेड टू जीआईआर वर्कशॉप. ठीक है, तो दैट वाज रिलेटेड टू एन अपडेट विच आई वांटेड टू टेल यू आउट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, राइट, इसके अलावा इसको अगर कोई डाउट होगा, राइट, यू कैन जस्ट आस्क द डाउट एट द एंड, राइट. डेफिनेटली विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू दिस वर्कशॉप एट द एंड. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आई वाज रेफरिंग टू, राइट, यहाँ पे आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज फ्रीलांसिंग, राइट. फ्रीलांसिंग के लिए एक चीज मैंने लिखी थी, आर्टिकलशिप, हाँ, अच्छा एक सेकंड, हाँ, ये just a second. Freelancing में this 3 different websites are also related where you can just be a part of a good content writer. Those who are part of a good content writing, right, you can be able to write this contents into this 3 different places out. तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अदर एक्टिविटीज, बीसीजी का मैंने बता दिया. हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको खुद से भी बिल्ड करना है अपना सीवी, तो यू कैन ऑल्सो हैव अ इंडिविजुअल सिमुलेशन गेम्स व्हिच आर देयर, राइट. आप इंडिविजुअली भी सिमुलेशंस खेलो, उससे आपका प्रोफाइल बिल्ड होगा. अगर आप जीआर में रहोगे तो हम तो खिला ही रहे वहां पे, बट अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को खुद से करना है सब कुछ, तो आप कर सकते हो. बट सिमुलेशन इंडिविजुअली इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000. ठीक है, तो वो पर लाइसेंस बहुत कॉस्टली बैठता है. तो डेफिनेटली आप बैच में आते हो तो हमको बल्क में हम लेते हैं, तो इट्स बिकम चीपियर फॉर अ स्टूडेंट्स आउट. तो सिमुलेशन गेम्स इज आल्सो कैन प्ले इट आउट बिकॉज लॉट ऑफ बिग बी स्कूल्स प्लेज दिस आउट. तो वो चीज आप आई जस्ट टोल्ड यू. कम्युनिकेशन स्किल्स पे विल हैव अ सेपरेट सेशन. Reference, how you can find out people, and join the places where you can find out the top people out, like gym, sports clubs and events. See, I told you one of the important parameter reference ढूंढना है. अब रेफरेंस कहाँ से लाओगे, राइट. जिम में आपको कोई ना कोई मिल जाता है. स्पोर्ट्स क्लब, फाइंड आउट अ बिग स्पोर्ट्स क्लब which are there, and join lot of events which are going to be happening, like icai is one of the event. I don't know how many of you have heard about icai. नहीं सुना है तो लिख लो icai के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं, वहां जा सकते हो, बहुत लोग मिलेंगे आपको. ठीक है, वैसे जिम ज्वाइन कर सकते हो, है ना, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे. स्पोर्ट्स क्लब हो गया तो यू कैन जस्ट ज्वाइन लॉट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब व्हिच आर देयर, दे विल बी एबल टू फाइंड इट आउट. नेटवर्किंग इवेंट इज अगेन ऑन 28th. यू विल बी अगेन एबल टू फाइंड आउट गुड रेफरेंसेस, राइट. तो 28th को है, तो वहां पे भी आ जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा. ट्रेनिंग वर्कशॉप में आओगे तो मेंटर्स के साथ आप मिलते हो, तो वहां पे आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छा मिल जाता है, रेफरेंस मिल जाते हैं कंपनीज के थ्रू. और लिंक्डइन इज समथिंग वेयर यू कैन नेटवर्क एंड मीट न्यू पीपल आउट. Moving forward, learn and advances into different courses, right. What you can do and capitalize your profile is, first is Power BI, right. Power BI करके एक tool है which you can use. It is going to be helping you to data crunching and automation. Tableau है, Advanced Excel, SAP, Alteryx, Data Studio. These are very good courses which are in high demand. If you could learn it out, right, आपके प्रोफाइल में थोड़ा सा leverage रहेगा. One of the most and highest demanding course which is nowadays is, or a lot of people are looking into, is AI. I don't know how many of you have heard about ChatGPT, right. सुना ही होगा सभी ने, of course, right. So nowadays now people are talking about how we can automate the things out. So Python is something which will help you to automate the repetitive task, right. So a lot of things which are there which you can learn and build your profile out and differentiate yourself from others. तो ये tools हैं जो आप सीख सकते हो, right, which is there. Definitely a lot of courses are available with us on our website. You can just check it out. Python is one of our best selling product. You can just check our website. Python भी है हमारे पास. तो खुद से सीखना है, खुद से भी सीखो, ऐसा नहीं है, right. Just telling out for your knowledge. Start working on your resume, right. It's again very important to build your CV out parallelly, because mark my words, on a day of your result you will have at least 2 to 3 offers. HR will directly message you, say for example, Shivam, can you please share your CV? That time you cannot say that मेरा CV ready नहीं है. Please understand, राइट. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीवन में मस्ती नहीं करना है, बट ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई विथ मस्ती ऑल्सो यू नीड टू हैव योर प्रोफाइल आउट. प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो 2 महीने हैं ना अभी के, इफ यू पुट अ राइट एफर्ट्स इनटू राइट डायरेक्शन फॉर दिस नेक्स्ट 2 months, ट्रस्ट मी, योर पैकेज विल एटलीस्ट इंक्रीज बाय 2 to 3 odd lakhs विद पर एनम. मतलब सोच लो, साल का इतना पैकेज आराम से बढ़ जाएगा. ठीक है, विच इज मोर देन योर मंथली स्टाइपेंड, राइट. तो दैट इज समथिंग विच इज गोना बी देयर. Next, I would request you to please start reading the books which are related to
business books or self-help books, right? So that is something which you can read, right? This is a good books which I will recommend: the CEO Factory and Rich Dad Poor Dad. If you want to read it out, bang on, nothing like it. Next, you can work on your personality development. Like you request everyone used to do work on your communication skills. I'll try to have the communication session in upcoming days. Meet new people out, again, events, and watch out the daily interview sessions. So I don't know how many of you have scrolled my YouTube channel. Go to my YouTube channel. There you'll be able to find out a lot of different domain-wise videos, company-wise videos. Dell में कैसे interview लेते हैं, Amazon में कैसे interview लेते हैं. जाके देखो. Trust me, you're gonna be loving it. Lot of videos I've conducted in the past, right? That is something which you can work on. Build your own personal brand. How you can build your own personal brand? By using more of a LinkedIn. Start writing post on LinkedIn, start writing post on Quora, start writing post on Medium, which is there, right? So that is something which you can do. Next, very important thing, find out a good mentor for you, right? So definitely we are going to be there with you if you're part of workshop. तो वहाँ पे हम करते हैं ये मदद. But you can find out a good mentor on LinkedIn, right? So that is something where you can find out a good mentor for yourself who can guide you. And start working on your job and preparations and interview preparations. We are already definitely, you'll always feel out that you're running short of time. Because the time you understand the domain which I wanted to get into, say for example, अगर आपको लगा कि मुझे अब IB में जाना है, देखो please understand, this is practically which a lot of students feel, है ना? तो हमारे इसमें हम लोग क्या करते हैं, we'll guide you about multiple domain. After 10th day you'll feel like नहीं सर, है ना, IB is something which I wanted to get into. The next question which comes to your mind is that investment banking में जाना है. अब उसके जाने के लिए भैया प्रोफाइल पूरी अलग बनती है, right? Where you genuinely wanted to know that कि भैया देखो, I should know how to prepare a financial model, I should know how to project the numbers out, I should know how to value a company on a practically on a Excel. ठीक है, जब आपको ये पता होगा तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा. At the start everyone asked that, said that कि नहीं मुझे जिस आर्टिकलशिप में डोमेन I worked, I don't want to work into that domain. ठीक है, if you don't want to work into that domain, bang on, very good, at least you know what you don't want. But now you need to understand what I want. Now you say that ठीक है, मेरा articleship is into direct tax, I don't want to do direct tax. ठीक है, you say that I want to get into stat audit, but stat audit में जाने के लिए उतना ज्ञान भी तो प्राप्त करना पड़ेगा, right? So this is a time where you want to leverage it out, and that is something which we have already built in, and we are helping you out to do it in a better way. खुद से भी कर सकते हो, that is not a problem, but it will take a lot of time and effort. ठीक है? So what I'm trying to tell you, utilize this time in a right way, in a right direction. That is the summary which I wanted to carry out. Multiple ways to do it, right? I've started with internships. Find out some internships, apply it multiple places out, build your profile, find out the references, learn some courses out, find out the domain you want to get into. Once you understood the domain where you want to get into, build your profile related to that domain, find out a mentor related to that domain, and then start working on your profile building and personality. Okay? If you could do it, all these things out, bang on, you're going to be the best person. The day the results are going to be there, you'll say that, bhaiya, ab mere ko tension nahi hai. I know where I wanted to get into. I know where I wanted to apply. I know how I can apply there. Everything is going to be sorted for you. So that was the agenda where you want to, that was the agenda which I started this session with, right? So that is something which I wanted to cover for all of you guys, right? And I hope that you must have learned something new. कुछ तो नया सीखे होंगे in this session. Yes, no, yes in the chat box. I hope you have learned something new in this session out, right? I've tried to make the session very crisp, to the point, within one hour, right? And I've tried to incorporate the maximum level of knowledge which you can gain within this short span of 1 hour, right? My sessions are like this only. 1 घंटे का रहेगा, 1.5 घंटे का रहेगा, but you'll find out a lot of learnings which are there. Now I could imagine if it is for 3.5 hours or 4.5 hours, right? वो क्या level का learning आप लेके जाओगे, right? So that is something which we have worked it into, right? Definitely now what I'll do is that I'll open the forums which are there, right? I'll open the forum for doubts which are there, because definitely it's important to interact with you, right? And what I will do is that I'll ask Ranjit have shared the link, right? तो वो चीजें आप तो all the files which are there are gonna be shared with you guys on the email. I would also request you to please join our WhatsApp group का community which is there, because we are also going to be sharing these files over a WhatsApp group. It's easier to मतलब मेल वेल भेजने से अच्छा फट से WhatsApp पे मिल जाता है. It's easier for us to circulate. So Ranjit, if you could share the link of our WhatsApp group, which is for CA Inter and CA Final, both. Right there also, I'll try to share a lot of interview related stuff, questions related to that.
ठीक है. Just a second, our team is going to be sending the links which are there. Ranjit is there from our team. He's going to be sharing it. If he's not there, I'll share it. हाँ हाँ, ईमेल पे भेज देंगे. अरे सब भेज देंगे बेटा, टेंशन ना लो. Right, I'll just share it, don't worry. I'll share all the link which are there, and in the chat box you can parallelly decide which one you want. Okay. Now I'll open the forum for the people, those who are there in the chat box. You can just put एक second रुक जाओ. I'll just disable the chat which is there so that the links of WhatsApp group. रंजीत आप YouTube live पे भी share कर दो. ठीक है, उसको मैं पिन कर देता हूँ. ठीक है. So people can join the WhatsApp group, and parallelly I would request you to please put your doubts on the YouTube live. Then we'll cover the doubts from a Zoom. है ना? तो जो भी doubts है, if you want to ask anything out, we'll be really happy to answer your queries. ठीक है. Yes, I'll just scroll down. Amazing. Thank you. Thank you. Yes. I'll just enable the chat box for the people, those who are on Zoom. You can also put your doubts on the Zoom chat. Can you tell more about icai? Icai is, again, it's more of event specific for the startups guys, right? If you are more of wanted to learn something new, more related to startup, then you can go there. है ना? Acha, great. So who is the winner? Winner is Apurva. Apurva is the winner. I've taken the screenshot. The answer was 16. Apurva, if you could share your details to our team, Ranjit. है ना? Apurva Veera Panti, if I pronounce the surname correctly. हाँ मोशिम, सो सॉरी, आपका आंसर थोड़ा लेट था. है ना? सबसे पहले अपूर्वा का आंसर था. है ना? जिन्होंने 16 बोला, बहुत बढ़िया. राइट, डेफिनेटली विच इज देयर. जिन्होंने, हाँ अच्छा, सामने सेइंग कि मेरा पुराना बैच था जीआर का, मेरे को फिर से अटेंड करना है. बिल्कुल आ सकते हो. आपको मेल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे बैच शिफ्ट का फॉर्म आया होगा. टीम आपका डेटा वैलिडेट करेगा. वंस दैट इज डन, वो एक बार अप्रूव हो जाएगा हमारी टीम से, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको लिंक्स और डिटेल्स आ जाएगी. ठीक है. ओके. राइट, और क्या डाउट है? बताओ बताओ बताओ. राइट, आई हैव अ डाउट. डज प्लेसमेंट हैपन ऑनलाइन or it was COVID phase? Acha, very good question, Shweta. ICI campus placements still are going to be online only, right? So it's important to prepare on a virtual mode. A lot of companies are still offering work from home opportunities, which is there. Still 80% of our companies are conducting virtual interviews, right? So it's very important to at least prepare virtually, right? So that is what I'm doing. And इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे physical meetups होते हैं, lot of sessions which are there. तो तब हम लोग बहुत सारे sessions कर लेते हैं, which is there. So don't worry about it. Okay, sir, I'm always anxious about my articleship experience. Can I opt for a profile with a little or no experience? Yes. तो जिसका आर्टिकलशिप अच्छा नहीं हुआ है, राइट, या जिसका आर्टिकलशिप डमी भी है, ठीक है, डोंट वरी, राइट, वी हैव सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम आउट. आपको लास्ट डे पे असाइनमेंट जो मिलता है, राइट, प्लस आपको क्लासेस मिलेगी हमारी एडिशनली उस डोमेन की, वेयर यू कैन जस्ट लर्न दैट डोमेन फ्रॉम अ स्क्रैच एंड बिल्ड योर सीवी इन अ बेटर वे. ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच यू हैव सॉल्व फॉर यू. Okay. How to exactly know which is the best domain for us? अच्छा, वंशिका पूछ रही how to know the best domain which is best for us. वंशिका, देखो, ऐसा नहीं है कि एकदम से वो मैं जादू करूंगा, अम्बिम बुम बिम स्वाहा, इसका बेस्ट डोमेन निकल जाए. ऐसा नहीं होगा. You need to talk to all the mentors out which is there. You need to understand that domain in detail. फिर आपको उस पर मटेरियल हम जो देंगे वो पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्लैरिटी मिलेगा. प्लीज अंडरस्टैंड. लाइफ में वंस यू आर ज्वाइनिंग आफ्टर क्लियरिंग 12th, आपने एडवाइसेस ली थी बहुत लोग से कि क्या मुझे सीए करना है. आई होप एवरीवन ऑफ यू हैव टेकन बहुत सारा ज्ञान, है ना, कि भाई सीए करूं कि नहीं. किसी ने बोला मत कर, किसी ने बोला कर ले, बट यू हैव टेकन ज्ञान एंड देन यू हैव डिसाइडेड चलो नहीं, दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन डू. इन अ सिमिलर वे यू नीड टू टेक अ ज्ञान फर्स्ट, राइट, which will definitely, it's gonna be a series of tasks. So if you see this my curriculum, जो मैंने curriculum बनाया इसलिए वो बहुत डिटेल में बनाया है भाई, right? Almost 30 hours of a time where you're just discussing about domain clarity. Because understand, आज तक के जो डिसीजन आप ले रहे थे were based on someone else choices. Now you cannot say that कि मेरे को दीदी ने बोला कि तू स्टैट ऑडिट ले ले और ले लिया. नहीं भाई, तू स्टैट ऑडिट के लिए नहीं था, मान लो. You are built for something different. You are not exploring FP&A option. You are not exploring finance option, right? So that is something which you need to understand. Okay. Yes, sir. What are the different domains, right?
different domains we are going to be having on session on 25th. अच्छा, one more important update, right, which is there. बहुत सारे आपके लिए इवेंट्स हम लोग प्लान किए हैं, राइट. आप प्लीज 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 अपने दोस्त भाइयों को, जूनियर्स को, सीनियर्स को रेफर कर दो, राइट. जैसे अब डोमेन वाइज सेशन इज ऑन 25th, ये भी डिटेल में रहेगा. जैसे आज आप सीख के जा रहे हो वैसे भी बहुत सारा सीख के जाओगे. प्लीज रजिस्टर कर लो. आर्टिकलशिप का 24th को एक कल है, ये आपके जूनियर्स को रेफर कर दो. 26 को फिर लाइव फाइनेंशियल मॉडलिंग रहेगा. ये सेशन थोड़ा सा हैवी रहेगा बिकॉज 2 घंटे का है, ठीक है. तो चाय की चुस्की लगा के आना एकदम, because definitely we are going to be working on a live data. I'll give you live data. We are going to be working on a ratio analysis. कैसे practically analyze करते हैं वो हम सीखने वाले 26 मई को. बहुत बढ़िया सेशन रहेगा. मार्क माय वर्ड्स, यू लव दिस सेशन आउट, ठीक है. फिर मैक्सिमाइजिंग फ्री टाइम टू गेटिंग अ हाई सैलरी, इस पे हम देखेंगे. और फिर हमारा नेटवर्किंग इवेंट है, ठीक है. तो वेरी ऑल दिस सेशंस आर गोना बी देयर. Okay, let's see what are the different queries which are there. हाँ, सैंपल सीरीज मैं शेयर करवा दूंगा, डोंट वरी, विच इज देयर, है ना. और बताओ क्या है सर. आई फाइंड एंशियस अबाउट माई एक्सपीरियंस फ्रॉम माई आर्टिकलशिप. बता दिया मैंने सर. द पीपल हु हैव अपीयर्ड फॉर ग्रुप 1 सी इंटर May 23 एंड वांटेड टू आर्टिकलशिप इन बिग 4, दे शुड डू द कोर्स. बिग 4 प्रेफर करता है बोथ द ग्रुप्स क्लियर, राइट. ऑनेस्ट आंसर, राइट. मैं झूठ नहीं बोल रहा, बट हाँ, प्रेफर करता है बोथ ग्रुप्स क्लियर. तो अगर आपका उस सिनेरियो में बैठ रहा है तो डेफिनेटली इट इज गोना बी ग्रेट फॉर यू, ठीक है. सर, May 23 my third attempt. I continue worked until now at some place as my articleship. Would you recommend to quit a job based on my current scenario? देखो यार, आपको अगर लर्निंग हो रहा है तो मेरे हिसाब से यू शुड कंटिन्यू. एंड इफ यू आर नॉट फाइंडिंग एनी समथिंग न्यू, बट दैट इज समथिंग व्हिच यू डोंट वांट टू गेट इनटू, देन आई थिंक टाइम टू स्विच एंड फाइंड आउट समथिंग ग्रेट व्हिच इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट, ठीक है. तो ये चीज है. इसके अलावा आईबी स्पेसिफिक रेफरेंस, आईबी स्पेसिफिक रेफरेंस, हाँ, आईबी स्पेसिफिक रेफरेंस भी मिलेगा वर्कशॉप में. आईबी के कितने सारे मेंटर्स आते हैं हमारे. इसके अलावा मैं लास्ट डे बोला ना, यू विल गेट अ पर्सनलाइज मेंटर. तो यू कैन चूज एनी ऑफ द मेंटर्स व्हिच आर देयर, है ना. दिस इज अगेन, आई विल जस्ट टेल यू आउट, है ना. तो जो हमारा प्रोफेशनल मेंटरशिप का पोर्टल बनाया हुआ है, यहाँ से आपको एक चॉइस मिलती है कि आपको जो भी डोमेन के मेंटर चाहिए वो आप चूज कर लो, है ना. दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ पैकेज, है ना. आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा. जैसे मैम ने बोला कि इनको चाहिए, है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अलग अलग मेंटर्स हैं, राइट. दोज आर वर्किंग इनटू डिफरेंट डोमेन. O3 Capital is again one of the biggest firm, right. He is again very good mentor out. He is a director, VP of Anand Rathi. मतलब देखो, इतने बड़े मेंटर के साथ यू विल डू पर्सनल काउंसलिंग व्हिच इज देयर. तो दैट इज आल्सो गोना बी पार्ट ऑफ इट. स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लाइव बैच आएगा गणेश, तब आपको अपडेट कर दिया जाएगा. कैन आई स्टार्ट जॉब इन दिस पीरियड और शुड आई वेट फॉर माई रिजल्ट्स. देखो, मैं ये सिंपल बोलूंगा, इफ यू डोंट हैव अ क्लैरिटी कि मेरे को जॉब लेना या शुड आई वेट फॉर रिजल्ट्स आउट, सिंपल आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि आपका जो प्रोफाइल है अभी अभी तक के, आप अपने सीवी को कैसा देखते हो. अगर आपके सीवी में कुछ अच्छा नहीं है और यू हैव अ ह्यूज गैप और एक्सपोजर इज नॉट दैट ग्रेट, आई वुड से दैट थोड़ा सा आप कुछ प्रैक्टिकल सीखो, बिकॉज दैट इज गोना बी हेल्पिंग यू टू ब्रीच दोस गैप आउट. Again, I'm saying, mark my words, you'll regret it after 2 months once the result are out, saying that कि मैंने कुछ नहीं किया इस पीरियड में. ये टाइम को वेस्ट मत करो. I've seen students crying after 2 months saying that सर मैंने ना प्री रिजल्ट टाइम बहुत वेलाबंदी किया है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मस्ती मत करो, बट मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 4 घंटे 5 घंटे एटलीस्ट इन्वेस्ट योर टाइम टू रीड एंड लर्न समथिंग न्यू, ठीक है. तो दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू डिसाइड. सर, वुड बिग फोर एक्सेप्ट मल्टीपल अटेम्प्ट स्टूडेंट्स? अप टू 4 attempts दे एक्सेप्ट, राइट. 4 और 5 अटेम्प्ट्स तक एक्सेप्ट करते हैं. उसके अलावा द 6th पॉइंट, आई होप यू रिमेंबर द 6th पॉइंट इन माय सेशन व्हिच आई हैव टोल्ड यू, ऑलवेज वर्क्स. भूल गए रेफरेंस, ठीक है. चाचा मामा किस दिन काम आएंगे भाई. तो दैट इज समथिंग व्हिच विल हेल्प यू आउट. आई हैव टेकन 6 attempts in CA final, want to get into MBB or IB. Have done a lot of extra curricular and extra curricular and this. हाँ, तो MBB में जाना है तो स्पाइक इज समथिंग व्हिच पीपल लुक फॉर, तो वो चीज आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है. ओके, मेरे सर, व्हेन विल द बैच स्टार्ट? बेटा, बैच इज गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम 29th May. इवनिंग में है 7 से 10:30, राइट. अगर कुछ सेशन मिस हो जाता है तो अगली बैच में आ सकते हो. अगर सेशन में आपको कुछ भूल गए या फिर से देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग पूरा अवेलेबल रहेगा. बैकअप इज गोना बी देयर, डोंट वरी, ठीक है.
So I think that's it. That's all about the details which I wanted to talk about. Right? अगर आपको कोई queries रहेगा, any queries out, you can reach our team. Right? रंजीत अगर आप हो तो एक बार हमारे camonk support team का नंबर भी आप send कर सकते हो. So they can also reach out to our support team which is there. Right? कोई queries रहेगा तो they can reach out to them as well. इसके अलावा right, I just send the number out. Okay, क्या हो गया हर्ष भाई? हर्ष का कोई query रह गया क्या? आर्टिकलशिप चल रहा है, साथ में ब्रांड बिल्डिंग इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं? बहुत कर सकते हैं यार, पार्ट टाइम करो. राइट, तो दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन डू, है ना? तो वो चीज कर सकते हो. ठीक है, तो ग्रेट गाइस, रियली हैप्पी टू सी यू joining in for this session out. Stay connected with us, right? We have lot of series of sessions and events which are going to be coming, right? And if you have any queries out, you can just call our team, support team, right? They are happy to have happy to solve your queries out. इसके अलावा, right, I would request every one of you to please be a part of upcoming events and session. Trust me, you're going to be learning a lot of things. And parallelly, please notes बना लो भैया, है ना? कंजूसी मत करो. जैसे सीए के एसएफएम ऑडिट की मेड द नोट्स आउट, पैरेलली आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक द नोट्स रिलेटेड टू दिस, बिकॉज यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स आउट. अच्छा, एक और चीज, अरे रंजीत एक कूपन मांग रहे हैं भाई, कूपन बता दो इनको एक बार. द कूपन इज GI, एक सेकंड, आई जस्ट शेयर इट लास्ट टाइम, है ना? GI 200 इज द कूपन कोड. जिसने नहीं लिखा भाई लिख लो, राइट? ठीक है, GI 200 इज द कूपन कोड. ठीक है, तो great guys, thanks once again. Bye bye, stay connected, and we'll meet our tomorrow's session, right? Tomorrow's session we'll meet it out, and tomorrow is for articleship. Day after tomorrow is a very important session for you, which is domain wise. वो थोड़ा सा again heavy रहेगा, and day after tomorrow का भी is again going to be a bit heavy session out, so that is something which you can part of it. ठीक है, thanks once again, bye bye.